Hello friends, welcome back my YouTube channel Investments. In this video I will explain sequence of real number. This is the part 1 and I'm going to discuss complete sequence of real number. Before that you can watch my previous videos on basics of real analysis. That is something related to the sets of basics of sets, bounded sets and all, Archimedean property, open set, closed sets. So these all are basics in 6 parts I have covered in my previous videos. You can visit my playlist and watch those videos. Now in this particular video I'm going to start sequence of real numbers, and in this video I will discuss definition and example of sequences, and types of sequence, and then limit point of sequence, Bolzano-Weierstrass theorem, and some important results that I'm going to discuss in this particular video. This will be helpful for IIT JEM, GATE and CSIR NET. My name is Manoj Solanki and I'm going to start this. If you are getting the concept and like the video, please share and subscribe the channel and press the bell icon for the get notified first. Let's start the topic. So first of all, we are first just to define the definition of function. That is something related to a function. A function is nothing but a mapping, which we have already discussed in the previous video. So the function from natural number, the set of natural number to real number, is called a sequence. Okay, this is nothing but a function in which I will put just natural number. It means my domain will be natural number. It will start from n is equals to 1, but it will map anywhere in real number in set of R. That's basically R. Okay, and it is denoted by Sn, An, and Fn. Either it may be the set of real numbers, or it may be the function like set of function also, sequence of function also. Okay, so it is defining by Sn, An, and Fn. Now how is it defining? Like this. For example, I will say Sn, and this is the proper notation of this. So in this particular notation we'll just define like this. So my sequences are like this. This is S1, S2 up to Sn. Okay, it means we are taking n is equals to 1 to natural number, and these all are entries belonging from natural number. Similarly, if I will write An, then it is nothing but it will be An. Okay, yeah, is this Sn is nothing but a set of sequences. Okay, this is An. An is going to be a sequence, and that sequence is representing like this. Okay, here it's S1 again a sequence, S2 again a sequence. So this is the notation. Okay, and if it is like this, then A1, A2, A3 up to An. Similarly, if I will write Fn, then it is again going to F1, F2, F3 up to Fn. So these are some notations. Now the examples of sequences, any kind of sequence we can take. For example, n. Now what is this? It is nothing but start from 1. Okay, start from 1. I will put n is equals to 1, then n is equals to 2, then n is equals to 3. It will go up to infinity. Okay, because it is mapping to R. Similarly, 1 by n, if I will write like this, then it is what? 1 by 1, okay, 1 by 2, and then 1 by 3, and go up to 1 by infinity. For example, I can write sine 1 by n. Okay, this is also sequence. How is it sequence? Then it is sine of 1, then it is sine 1 by 2, then it is sine 1 by 3, up to what? Sine 1 by n. Okay, this is the sequence. I can take one more example. For example, minus 1 power n upon n. Okay, so in which it is taking what? If it is 1, then it is minus of 1. Okay, if it is 2, then it will be 1 by 2 positive. If it is 3, then minus 1 by 3. Okay, so it will map up to go up to minus 1 upon n. So these all are the example of sequencing, and we'll explore all these sequences in this particular video. So now what is the range of sequence? So if you have any sequence, An is a sequence of real number, then we define the range of sequence such as that numbers are from where the entries are coming. Okay, it means that range means something like that. If I will take example of a sequence like 1, 1, 1, and this is up to 1. Okay, it will go up to 1 only. Now what is the range in this case?
So the range of this an is going to be 1. It means range is something, what? Range is something element of basically those element of codomain whose previous image or pre-imaged is present in the domain. Okay, that's what the definition of range. So here the range is 1. Similarly, if I will write like this, it will be 1, 2, okay, 1, 2, then 1, 2. If I will write 3 again, then 1, 2, 1, 2. So here it is, you can see in range, there are elements 1, 2, and 3. These are in the range. It means what is the output for this? These are the range. Okay. So similarly, if I will take, like 3 will be here also. If I will take one example like this, if it is 1, 2, 3 up to n, what is this? This is the sequence an, and it is denoting like this. We can define like this. Now what is the range in this case? Now in this case, range is nothing but my natural number. So complete or this, so the whole natural number is going to be the range of this particular sequence. Okay, this is all about the example of ranges. Okay, now next, what are some note point on this? Okay, range of a sequence may be finite or infinite. Okay, may be finite or infinite. For example, you can see it is what finite. Okay, we have an example. It is finite, and it is what infinite. We have already discussed. Okay, similarly, terms of sequence are always infinite. Range is finite and infinite, but not empty. See this, but not empty. This one is important. And terms of sequences are infinite. Okay, a sequence will go up to infinite. Because of that, the cardinality of natural number is going to be is like what we are saying, that this one, and this is nothing but infinite. It is like denoting something infinite. So terms in sequence is like terms in sequences are always infinite. Okay, if range of a sequence is finite, then at least one term will repeat infinite time. For example, we have this. So if it is what, if it is what, finite, range of sequence is finite, it means at least one term will repeat infinitely time. So you can see here 1, 2, 3, these are repeating infinitely time. It means at least one. For example, this one, this is also what, finite. And here at least one, it means one itself is repeating infinitely time. So at least one term will repeat infinitely time. If range of sequence is infinite, then only finite many times, okay, repeat only. So terms are repeat only finite many times. For example, here it is what, infinite. Then one occurs only one time, 2 occurs only one time, 3 occurs only one time. It means what? That terms are repeating or terms are occurring only finite time. Okay, but in this case, here the terms are repeating infinitely time. This is what the important case here. Okay, so next we have types of sequences that we are going to discuss here, and that is something important. So in this types of sequence, first of all, we'll explore what is the constant sequence. So what is the meaning of constant sequence? So if you have any sequence an like this, for example, C1, C2, C3 up to Cn, where all Ci's are constant, or not all Ci's. I'm just going to defining like this, C1, sorry, C up to C, where C is constant. For example, an is equals to sequence 1 only. This is what, 1, 1 up to 1. This is the constant sequence. Okay, so all the terms, not all terms are constant. Not all terms, obviously, real it is constant, but all terms are single. Only one term will repeat infinitely time. That is what the constant sequence. Okay. Next, we have bounded sequence. It is related to something, boundedness of the set. Okay, that we have already discussed. Now it means that if for this sequence there exists a k belonging from real number such that this k will be such that
this k, or we can say one k1 and k2 belonging from this. Okay, okay, yeah. Before going to bounded sequence, I will explain what is upper bounded, like bounded above sequence and bounded below sequence. Okay, first I will explain bounded above sequence, and then I will explain bounded below sequence. Bounded below sequence is what? Okay, first bounded above sequence. Bounded above sequence means that, for example, a sequence, for example, there exists a k1 belonging from real number such that each and every element will be less than or equal to that k. Okay, and if it is bounded below, it means there exists a k2 in real number. Each and every element of sequence will be greater than of that k2. Okay, so now what is the meaning of bounded sequence? If these both cases are happening, it means that if a sequence is bounded above and bounded below, then that sequence is going to be bounded sequence. It means each and every element will be less than of k1 and will be greater than of k2 for every, or not for every, there exist k1 and k2 from real number, and these are going to be the upper bounds and lower bounds. That may be supremum and infimum also. Okay, this is what the bounded sequence. For example, bounded sequence is what? Example, we can take 1 by n. What is this? It is 1 by 2 and up to what? It is tending to 0. Then this is what? Bounded above with 0. Bounded below with 0 and bounded above with this. So this one is my k1 and this one is my k2. Okay. Similarly, if I will take n, then it is what? Unbounded. It is unbounded, but it is what? Bounded. Why it is unbounded? Because it will start from 1, 2 and go up to infinity. There does not exist any kind of real number which will be greater than of infinity. Okay, so this is what unbounded. Similarly, you can take minus 1 power n. This is also unbounded. Okay, so these are the some examples. Now we have monotonically increasing sequence. Now what is the meaning of monotonically increasing sequence? It means that if every element is less than of its next element for every n belonging from natural number, or you can say your function is increasing function. Function is what? Increasing function. Let's say let's take one example here. For example, n. So it is what? 1, 2, 3. You can see here what? 1 is less than of 2. 2 is less than of 3. Okay, and again 3 is less than of 4. So it will go up to infinity. So this is what your monotonically increasing. Again, if you will take n square, it is also what? 1, 4, 9. It is also what? Monotonically increasing. Now next we have monotonically decreasing. Just the same opposite thing. It means that for every next element should be less than of the previous element for every n belonging from natural number, or you can say your function is what? Decreasing function. Let's say minus of n. It means what? Minus 1, minus 2, minus 3, and it will go up to minus infinity. 1 by n, it is what? 1, 1 by 2, 1 by 3, up to 0. Okay, so here it is tending to 0, not up to 0. So it is what? Decreasing. Here you can see 1 by 2 is less than of 1, 1 by 3 is less than of 1 by 2. So these all are the example of monotonically decreasing sequence. Okay, now here we have, yes, we have one next type is strictly monotonically increasing. Strictly monotonically increasing means they should not equal any
like there should not any equality here. It means if it is n strictly less than of an plus 1, okay, for every n belonging from natural number. What is the example? This one is strictly increasing, this one is also strictly increasing. Okay, here what is the increasing thing here? We can add example, for example 1 1 2, okay, 3 3 5, okay, 7 7. So this is also monotonically increasing, but not strictly increasing. It is what? Monotonically increasing, but not strictly monotonic increasing. Okay, so these are the example and this is the difference. Similarly, strictly decreasing means that an plus 1 is strictly less than of an for every n belonging from natural number. For example, minus of n, 1 by n, these are other examples. Okay, this is what about the types of sequences. Now we'll discuss limit point of sequence. What is the limit point of a sequence? That we have already discussed. Limit point of set means if there is any cluster, if it is making cluster or points, infinite, a collection of points, that is called the limit point. It means if you have any sequence and there exists any real number any real number, L is said to be limit point of that sequence if each neighborhood of L contains infinitely many points. It means what is the neighborhood? This one is if it is containing infinitely many points of that sequence for every epsilon greater than 0, or you can say this thing also, then this will be if it will be contain infinitely many points, okay, then it is the limit point. Now how is it limit point? Then we'll see what is the limit point here. For example, I have one sequence, okay, I have one sequence that is an is equals to 1 1 and 1. This is the limit point, okay, and it will go up to infinity. Now okay, go up to infinite times 1. Now let's say 1 belongs to, let's say I will take just L. For example, my L is equals to 1, then I will just write what? L minus, okay, I will just write 1 minus epsilon 1 plus epsilon, okay, 1 minus epsilon 1. So is 1 containing in this? Yes. Next term is 1 again containing in this 1 minus epsilon. Okay, it means each and every term of sequence, it means each and every term of sequence is containing in between this only. So it means this is belonging from real number. This is my limit point. So 1 is the limit point. Okay, one thing is that if a term of sequence is repeated infinitely time, then it is a limit point. It is also repeating infinitely, and that we'll discuss next. Okay, for example, if I will take one more example here, this is first example, and if I will take second example like this, for example, a sequence is given that is 1 comma 2 comma 1 comma 2. Now see what is the limit point of this. For example, if I will take L is equals to 1, then it is what? L minus infinite, or let's say 1 minus infinite, 1 minus infinite, 1 plus infinite. So 1 is containing in this, but 2 is not containing in this. But just see whatever. Okay, I can't say 2 is not containing in this. If epsilon is very small, then I can say, but right now I can't pass any statement. Okay, so how many times this 1 will repeat in this sequence? It will repeat infinite time, that I can contain that. I can say that in this case also 2 will be belonging from this. If my epsilon is 1, let's say if my epsilon is 3, epsilon may be 3, okay, it is greater than 0, epsilon is greater than 0, it can be 3, then 2 will contain in this. Similarly, if I will write L is equals to 2, if I will write L is equals to 2, then you can see 2 minus epsilon, then 2 plus epsilon. Again in this interval also all the terms, like 1 will contain in this here, 2 will contain in this here. Now you can see here these both are making the cluster. So 1 will clustering here, 2 will clustering
like nearby this interval, this open, this like basically we can say neighborhood, then it is what 1 and 2 are limit points. So from here we can observe that for a sequence, limit point may be more than 1. Here it is what limit point more than 1. For example, okay, we'll conclude all the observation. Okay, for example, if I will take an is equals to 1 by n, it means what 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. Okay, here it is what if I'll take 1 by 1000, then it is what 0.001, then 0.0001, then 0.0001. All these points are just see on number line, how it will look like. It is what my 1, it is what 1 by 2, it is what 1 by 3 here. Okay, so let's say it is 1 by 3 here. So it means that these all are point. So these all point are here. I'm just giving you the idea of limit point. These all points are making the cluster here. It means if I will zoom it, then it will look like this. Here it is 0. All the points are here. There are infinitely many points. It means this neighborhood, this particular neighborhood, let's say it is my epsilon minus 0 minus epsilon, let's say it is 0 plus epsilon. This is my neighborhood. It is containing infinitely many terms. Okay, here it is not, because there are no negative term. In this particular area, it is containing infinitely many terms of sequence. So that 0 is the limit point. Okay, but see, here my limit point is belonging from sequence. Here also limit point is belonging from sequence. Here limit point is not belonging from the sequence. It means limit point may or may not be belonging from the sequence. It means that we have observed three things. One thing is that if a term is repeated infinitely time, then that will be the limit point. If a term, and second observation from this example, limit point may be more than 1. Next example, limit point is not necessary that limit point is belonging from the set sequence itself. Okay, so that's what we have some result here. So a limit point of sequence may or may not be belonging from the sequence. That's what the 1 by n. 0 is the limit point. Okay, next we have if a term of sequence is repeated infinitely time, this one, then it is a limit point. For example, 1 2 1 2. You can see the example here. Limit of a sequence is limit that we will discuss in next videos of the limit of a sequence. Limit of a sequence is limit point of sequence, but converts not to. Okay, but converts not to, that we will discuss. Next one is Bolzano-Weierstrass theorem. This one is important theorem. Because of that, it is saying that every bounded sequence has at least one limit point. Using this Bolzano-Weierstrass theorem, I will be able to say every sequence has at least one limit point. Now, how I will justify my answer? Just see. I will be able to say that my sequence, each and every sequence has at least one limit point. Okay. Now, limit point have two cases only. First case is case number 1, that is range is finite, and another case is case number 2, that range is infinite. Okay, I will discuss both the cases. If range is infinite, see, if range is finite, first let's say if range is finite, then at least one term repeats infinitely many times, that we have already discussed in the definition of range. If range is finite, it means at least one term will repeat infinitely many times, and that becomes the limit point of sequence. Okay, in this case limit point exists. Okay, if range is infinite, then by Bolzano-Weierstrass theorem, range infinite, and it is bounded sequence. Range infinite, and it is what? Bounded. Okay, range is infinite and it is bounded, then we can say by Bolzano-Weierstrass theorem that it has at least one limit point. Hence,
sequence has a limit point. It means sequence has a limit point. So in both the cases, limit point is existing. Okay. Now we will discuss some questions. Does there exist a sequence with no limit point? Let's just check it. See, here we have discussed sequence has a limit point. Sequence has at least one limit point that we have discussed in this case by Bolzano-Weierstrass theorem. Now the question is, does there exist a sequence which has no limit point? Yes, this sequence. See this, 1, 2, and up to n, and next. It is not up to n, it is going n to infinity. Now here it is no limit point. So no limit point here. Okay. Next, does there exist a sequence with unique limit point? There will be unique limit point. Yes, 1, 1, 1 that we have already seen. 1 is the only limit point. Okay. Next we have, does there exist a sequence having limit point as set? Yeah, limit point as set 1, 2, 1, 2. This is what limit point is 1 and 2. The set of limit point is known as the derived point, derived set. This is what derived set. It is called set of limit point. Okay. Does there exist a sequence with countable infinite number of limit point? Countable infinite. Yes, countable infinite. That is what the natural number. And we have a sequence. Wait. Yeah, we have a sequence like this. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, like this. Then what? Set range, the limit point is what? The natural number. Sorry. Yeah, itself. Limit point. Set of limit point. Yeah, set of limit point is nothing but natural number. 1, 2, 3, 4. All are going to be limit point. Does there exist a sequence with uncountable? Yes. For example, if I have 0, 1, 1 by 2. Okay. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2, 1 by 3, and if it is 2 by 3, then 3 by 3. Okay, wait. I made a mistake with this. Wait. 0, 1. With this 0, 1, 1 by 2. Okay. Then 2 by 2. Then 1 by 3, 2 by 3, and 3 by 3. 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4. Now it is what? 1 is repeating infinitely time. Then what is the limit point? Or uncountable rational number. All the rational numbers are belonging with 0 and 1. 0 and 1 interval. So from here we can say 0, 1, and it is what? Uncountable. Okay, this is the uncountable. This is the example. Now set of limit point of a sequence is closed. That is what the derived set. Okay, set of limit point is what? Let A be a set of all limit points. Okay. A dash. Okay, let's say A dash. Or if A belonging from A dash, this is called derived set. Okay, then A is limit point. Okay, if it is limit point, then what is the definition of limit point here? What is the definition? That A minus epsilon and A plus epsilon contains infinite many terms of sequence. Okay, infinite many terms of sequence. It means A minus epsilon, A plus epsilon is a neighborhood of some limit point. And here what? A minus epsilon, A plus epsilon has infinite many terms of the sequence an. It
it means A belonging from A. It is what a set, which is called closed set. Just you can see like this. If it is A and it is the derived set of this, my A is coming here inside. Okay, now it is what this one is as A. See, A is inside A is in also A dash. So what is the limit point here? This one is the limit point. This one is result. You can learn it. Okay, next we have one more result, that is set of limit point of bounded set is again bounded and compact. Compact means that it is closed, and if it is bounded and closed, then it will be compact. I will discuss convergency of the sequence, the definition, what is the meaning of the convergency of the sequence. I will discuss this with the examples, and after we'll see the monotonic sequence and convergency of monotonic sequence. Either it may be monotonic increasing, monotonic decreasing. We'll discuss the convergency and some important result based on the convergency of the sequence. So this video is helpful for IIT JAM, CSIR, NET and GATE, and my name is Manoj Solanki, and I will start this topic. Please like the video, share the video and subscribe the channel to get more videos related to the higher mathematics. Now let us start with the definition of the convergent sequence. What do you mean by convergency of a sequence? So whenever we will have a sequence, for example, it is a sequence denoted by like this. This is a AN sequence, and either it may be monotonic increasing, decreasing, or whatever this sequence. The sequence is said to be convergent. Okay, this sequence is said to be convergent to a real number L. So it means my sequence is converging to a real number L. It means L belonging from real number. If each neighborhood of L, it means L minus epsilon. Okay, it means L minus epsilon, L plus epsilon. If each neighborhood of L contains all the terms, or we can say the finite many terms of the sequence. So it means the neighborhood of this particular number, which is belonging from real number, which is nothing but a real number, if it will contain at most, or basically we can say that all the terms, or we can say that finite terms of sequence, then we will say my sequence is converging to that particular L, and the sequence is known as convergent sequence. If such L will exist for that sequence, then we can say that my sequence is convergent. Okay, so this is the definition kind of thing. We can just relate like limit of the sequence. It means whatever we have discussed in this in the like definition, we can just denote by. So it can be denoted by the limit of, okay, we can say the limit n tending to infinity. It means if my terms of sequence will goes to infinity of an, that will be L, and where my an tending to L as n tending to infinity. This is what the meaning of the convergency of sequence, and where L is called the limit. This L means that the limit of sequence an. Okay, so if every sequence, or if every terms will contain in this particular neighborhood of L, then we'll say that convergence, my sequence is convergent. But it is not necessary that every time the limit will be the limit point, whatever the concept we have discussed, limit point. See, in the case of limit, be the limit point. Okay, it will be the limit point, but it is not necessary that limit point be always a limit of the sequence. This is the important concept here. You will have to remember it. Okay, no need that limit point will be every time, or it will be always a limit. But if it is a limit, then it is always a limit point. It is at least like one of the limit point of that. Okay, now we will take one example for this. So for example, sequence minus 1 power n. Okay, this is what, if I will write this sequence, it is minus 1 1 minus 1 1 and go like this. So what is the limit point of this? So the limit point means the term of sequence which is repeating infinitely time. So minus 1 will repeat infinitely time, yes,
and plus 1 also repeat. Okay, then minus 1 and plus 1 both are the limit or limit point of this, but 1 is not limit, but here, but 1 is not a limit of the sequence. Similarly minus 1 is not a limit of the sequence. So this is what the thing that we have discussed. Okay, so here you can see limit point is not limit. Okay, and even though for this particular case, okay, why these both are not the limit point? So what is the okay, why these both are not the limit? Yeah, these both are the limit point, but why these both are not limit? So if I will take L, let's say my L is equals to 1, I will take 1 minus epsilon, 1 plus epsilon. Is my all the terms are belonging, is my terms are sequence, the terms of sequence are belonging from this particular neighborhood or not? This does not belonging, it is not belonging from this particular like neighborhood of this particular L. So this is the reason that 1 and minus 1 are not a limit of this particular example. Okay, and this is one of the important reasons. Now next we will discuss what is the convergence sequence, and what are the example of convergence sequence. So how can we identify for a convergence sequence? So we'll just check it by definition. So we'll take epsilon greater than 0. By definition, we can just start by definition. We'll just start, it will be greater than of, because it is a 1 by n, and n is belonging from natural number in sequence also. So here it will be greater than of 0 but less than of some epsilon. Okay, now if I will take what is my sequence here, if I will take 0 as a point, or let's say my L is equals to 0, then if I will substitute like this 1 upon n, okay, either it will be 1 plus n. Okay, one second. We can take the example. Okay, if I will write like this, so every terms will belonging from minus of epsilon to epsilon. Because of that, it is the interval. Let's see, it is my minus of epsilon and it is my epsilon, and this is what, 0. My all the terms will lie here only. This is 1 by n. And simple to find that my sequence is convergent or not, just find the limit. Okay, just find the limit n tending to infinity to 1 by n. It is nothing but 1 over infinity, and it is 0. If it is 0, it means exist and unique. Exist and unique, it means this is nothing but the limit of sequence, and my sequence 1 by n converging to 0 as n tending to infinity. Similarly, what is this? This is a constant sequence. Okay, this is nothing but constant sequence. If it is a constant sequence, then of course each term of A will be A minus epsilon and A plus epsilon. It means that the sequence A converges to A as n tending to infinity. So this is the limit of this particular example. Let's say if it is 1, then it is a convergent sequence. Yes, it is a convergent sequence and converging to 1. Okay, next we have 1 by root n. Just we will find the limit. So if n tending to infinity, 1 over root n is nothing but 1 over infinity, and this is also 0. It means that sequence 1 over root n is converging to 0 as n tending to infinity. This is also convergent. Let's say this is one. This is the example. So again, limit n tending to infinity, 1 upon 100 n is 1 upon infinity, and this will be 0. It means that the sequence 1 over 100 into n is converging to 0 as n tending to infinity. So this is the one of the easiest way that you can find the sequence is convergent or not. Now, while if you have these types of cases where in this minus 1 power n and this occurs, so you can just write it in simply if my n is odd and n is even, it means that if my n is odd, it is minus 1 over n. If n is even, it is 1 over n. Now,
it is my an. If I will take limit n tending to infinity of on minus 1 over n, it is 0, and also on limit n tending to infinity on 1 by n, it is also 0. It means that these both are unique and equal. So it means that minus 1 over n divided by n converging to 0 as n tending to infinity. This is also convergent sequence. Now, which one is not convergent? That how can we find? Just simple. Just take one example, n square. Is it convergent? It will not convergent. As n tending to infinity, the sequence n square does not go to any of, or does not go to, or we can say it will go to infinity. It means not convergent, or we will say it is a divergent sequence. Okay, these are these are some example of convergent sequence and divergent. Now, next we have some result related to the convergent sequence. Every convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded. Let's say one example. I have one example 1 by n. So it is what? 1, 1 by 2, up to 1 by n. Now, if n tending to infinity, what is the upper bound of this? Upper bound, or we can say supremum. Supremum of this is 0. Supremum of this is 1. And what is the infimum of this is 0. If supremum and infimum both exist, it means my sequence is bounded below and bounded above. Due to this, it is bounded above. And if it is exist, it means bounded below. If these both exist, bounded below plus bounded above implies that my sequence is bounded. We know that 1 by n is convergent sequence, that we have example. Next, we have unbounded sequence can't be convergent. Let's say n. It is what? Unbounded sequence. It will be 1, 2 to infinity. It means what is the supremum? It is does not exist. But what is infimum? It is 1. So here it is unbounded above. If it is unbounded above, then it is what? Unbounded. Simply say, you can say it is unbounded, and this sequence is divergent sequence, not convergent. Bounded sequence may or may not be convergent. See, this result and this result is totally depending. Convergent sequence is always bounded, but it is not necessary that every bounded sequence is convergent. Okay, for example, we can take one counter example that is very important, minus 1 power n. It is what? If I will write this, it is nothing but what? Minus 1, 1, minus 1, 1. It is a bounded in between what? What is the supremum? Supremum is 1. What is the infimum? Is minus 1. It is bounded, but not convergent. It is basically oscillating. It is also not divergent. It is oscillating between minus 1 and. Okay, this is the thing. So we have the result. It is not necessary. My convergent sequence will always bounded. See, if I will write this, then I can easily write this result. So the convergent sequence will always bounded, but converse need not be true. Okay, but converse need not be, maybe, or we can say maybe. Next, convergent sequence converges to the unique limit. Of course, whatever we have seen, minus 1 power n by n. So for this 1 by n, n minus 1 by n. For this limit is 0, it is also 0. If it is convergent, and this is what? Unique limit. Okay. Next, we have convergent sequence has unique limit point, but not convergent. Okay. Convergent sequence has, convergent sequence has
unique limit point, but not but converse not true. Yes, but not converse. It means converse means opposite, but opposite is not true. It means it is saying that convergent sequence has unique limit point. So, for example, if I have a sequence, let's say 1 by n, what is the limit point of this? It is 1. Okay. Yes. Yes. If my sequence is convergent sequence, let's say 1 by n, it has unique limit point. What is the unique limit point? That is 0. But let's say if it is a minus 1 power n, it does not have unique limit point. It means it is not convergent. Okay. Next, bounded plus unique limit point will be the convergent. See, whatever we have seen, we have one result. Okay. So the converse is not true here. From here, it is not true. But what if it is bounded plus unique limit point? We have 4 results. Just focus on it. First one, I want to explain here. If it is bounded, we can't directly say it is convergent. Unique limit point, we can't directly say it's convergent. If these both will get together, it means my sequence is bounded as well as unique limit point. Then only we can say yes, it is convergent. This is again a very, very important point. This is again a very, very important point. Okay. Alone bounded, we can't say that it is convergent. Alone unique limit point, we can't say it is convergent. But if these both will come together, bounded plus unique limit point, then we will say it is convergent. Okay. Next, we have some point, that is convergency of monotonic sequence. Monotonic sequence means monotonic sequence if it is monotonically increasing sequence. If it is bounded above, for example, monotonic increasing sequence, that we can take one example. Monotonic increasing sequence. Okay. Monotonic increasing sequence will be the monotonic increasing sequence will convergent only if it is bounded above. If it is not bounded, for example, n, it is unbounded above. Unbounded above, it means not convergent. Or let's say monotonic decreasing, if it is unbounded below, bounded below. If it is, yes, it is bounded below. It means supremum is 1. But what about infimum? It is 0. It means it is bounded below as well as it is a bounded sequence. It is a bounded sequence. So it means that it is convergent. So this is about the convergence of sequence. This is all about the result and convergence. It is very easy to find the limit of sequence, and you can identify either my sequence is convergent or not. I will discuss divergent sequence, oscillating sequence, its important result, and some examples based on these topics. So this is the sequence of real number part 4. You can watch all these parts in the playlist at YouTube channel MS Maths, and this is helpful for IIT exams, SAR Net, GATE. My name is Manoj Solanki, and I will start the topic. Even though you can watch the basics of real analysis in that playlist, go to the MS Maths YouTube channel and just watch the video. If you are really getting the concept and whatever I was discussing, if you are feeling that it is helpful, then you can like the video, share the video, and subscribe the channel to get more and more notification about the channel. Let's start the video. So first of all, I will discuss divergent sequence. What do you mean by divergent sequence? So for that, we have also seen that what is the meaning of convergent sequence. If I have any sequence an as n tending to infinity, is it really going to finite number? No, it is not going to finite number, then it is not the convergent. So that's the simple criteria here, that we are discarding sequence is not convergent. It means this sequence is
divergent. So what do you mean by the divergence? So a sequence is said to be divergent to infinity. Okay, there are two cases here. One thing is that if it is 0, if it is +1 and it is -1, either my sequence will be the divergent to infinity or divergent to -infinity. Okay, that we'll discuss two types of definitions here. Okay, first, divergent to infinity. A sequence is said to be divergent infinity if given any k belongs to R, there exists n naught belongs to natural number such that any of an which is greater than of that k for every n belongs to this number. Or we can easily say that if my terms of sequence are going to the infinity, it means this an is going to infinity as n tend into infinity. That's what my sequence is divergent. Okay, I can take the example. That's what I have earlier written here. Simply, it is what 1. If I will write the sequence, that is 1, 2, 3, okay, 4, and it will go up to what? Up to 1000, up to what? Up to infinity. That's why if it is going to infinity and what? Plus infinity. This is tending to. It's not actually infinity. It's tending to infinity or plus infinity. It means it is divergent sequence. More example we can take, that is n square. It is also going to plus infinity. We can take one more example, that is what? -1 power n into n. This is also what? It is nothing but minus of 1, 2, -3, +4. This will also go to plus infinity only, that we can say. Okay, but here in this case, if it will be -1 power n, now is it really going to the plus infinity or minus infinity? Because we don't know that infinity is odd or even, so we can't make any statement here that it will go to plus infinity, because we are discussing what? Divergent to plus infinity. Okay, but here it is, we can't say that it will go to divergent of plus infinity. It may go for infinity, because if infinity is odd, in your case, that will be minus infinity. If will be infinity is positive, like even, then it will be plus infinity. So we are not able to make any statement right now here. But it is a divergent sequence. That's the confirmed thing. Okay, next. We have note points that diverges to infinity means unbounded above but unbounded. Unbounded above but what? Sorry. Yeah, sorry. So diverges to infinity means that it is what? My sequence is unbounded above. Let's say it is what? 1 to infinity. It is starting from 1, but going to infinity, it is unbounded above. Bounded below is that. Okay, it is a bounded below. Bounded below means there exists a number which is, see, if it is 1, there exists a number which is less than of this particular n. And from all those numbers, this is my one of the greatest number. So this is what? Bounded below, but not bounded above. So it is called unbounded above. There does not exist any kind of number which will bound from upper side. Okay, it is something called bounded above. Then my sequence will go to positive infinity, or the diverges to positive infinity. Now at the same case, if my sequence is something like this, minus of n, it means that it is what? -1, -2. Now you can see here it is -1. It will go to minus of infinity. Here it is what? Bounded above, but it is what? Unbounded below. This is the case here. Okay, so now these are the some results, and these are some the definition of going to positive infinity and minus infinity. Again, minus of n square will also go to minus of infinity. Okay, next we have oscillating sequence. What do you mean by oscillating? Oscillating is something like that which will resume, or which will oscillate from one point to another point. The sequence will attain this term, again attain this term. Okay, this will oscillate between these two terms. So whatever the thing, I can take one example, that is -1 power n. It is simply what? If my n is odd, then it will be -1. If n is even here, then it will be 1. So it means my sequence will be -1, 1, -1, 1. Will never go to 0, it will never go to infinity, or it will never go to any of the finite number. Because of that, we don't know how infinity will behave. Infinity will be odd or even. That's why we can't make any statement. So it is a
oscillator sequence. Okay, this is the one of the example of oscillating sequence. But the thing is that which is neither convergent nor divergent, then we can say that it is the sequence which is oscillating. Something like this, minus 1 power n into n, it is again also going to be oscillating sequence. That's what we can't make any statement that it is going to plus infinity or minus infinity or whatever. Okay, now we have some result over here that a sequence an is convergent to plus infinity every subsequence of sequence, that we have already discussed the concept of subsequence earlier. What do you mean by subsequences? If you have, let's recall the subsequences thing. If you have any sequence an, and if you are making a n1, a n2, okay, a n3, these, let's say if these all are the sequences, subsequences, it means my n1, n2, n3, these should be strictly increasing. Oh, sorry, it should be strictly increasing sequence. These n numbers like 1, 2, 3 strictly increasing, then we can say this is the subsequences. So it means here it is a sequence an is converges to infinity, then every subsequences of sequence, every subsequences of sequence an is converges to infinity. It means a sequence converges to not, oh yeah, we can say is not converges to infinity, it is diverges to infinity. Sorry, we can converges to infinity, that we can make divergent. We can make this term as divergent. Converges to infinity means that it is tending to infinity, not convergent. The convergent mean word is wrong here, or not bit wrong. We can use for whole this term. Converges to infinity means that diverges. So if a sequence is diverges to infinity or positive infinity, then every subsequences of that let's say will also like go to the positive infinity, or will also diverges to positive infinity. And again, this is the same result holds for minus infinity. Let's say one example, n. If it is a sequence n, 1 second, yeah, you can write here, so that if I have a sequence that is n, what are the subsequences that I can take? 2n, okay, 2n minus 1. It means that I can take if it is 1, 2, 3, 4 up to infinity, then it will be 2, 4, 6 odd, or only the even numbers. Then it means what? It will also go to positive infinity. It will also go to positive infinity. If I will take 1, 3, 5, 7 over here, then it is also going to positive infinity. This is what the thing that we are understanding here. So if we will take minus of n over here, then also it is what? Going to minus infinity. So here it is going to minus infinity, and all these subsequences of this minus n will go to minus infinity. Okay. Next, we have a monotonically increasing sequence is either convergent or diverges to infinity. It means that a monotonically increasing sequence. Monotonically increasing sequence means, let's say this is what this is monotonically increasing. This is monotonically increasing sequence. It is also strictly increasing sequence. Similarly, the monotonically decreasing sequence, you can take the example of this monotonically decreasing sequence. Any monotonic sequence either converges or diverges, not oscillate. Every monotonic sequence. This is what my monotonic sequence. Okay, let's say this is what? This is again my monotonic decreasing sequence. Monotonically decreasing sequence. It is also it is converging to zero. It means every monotonic sequence either convergent, divergent, nor oscillating, but it will not oscillate it at any cost. I will discuss the algebra of sequence and the Cauchy theorem, and like Casaro's theorem, sandwich theorem, and its example. So I will start with the algebra of sequences. So how what kind of algebra we are using on the sequence. So that I'm going to start here. So just see here, I will discuss what algebra of sequence. So the algebra of sequence means, okay, algebra of sequence means here let an tends to a. It means an converging to a, and sequence bn converging to b. Then here we have, let's say, first result. Okay, so an
plus bn. If I will add both the sequence, then it will converge to a plus minus b. Okay, or let's say a plus minus. If I will make it as a plus and minus, I will take the addition and subtraction also. Then if I will multiply an into bn, then it will go to a into b. Okay, so third one is what? The algebra means that addition, subtraction, okay, divide. So if what is the sequence an divided by bn, then it will go to a by b, where bn not equals to 0, and also the limit it is not going to 0. That is what the b should not equals to 0. Okay, the fourth result is what? If I will multiply any of the sequence with any of the k, then it is nothing but k into a. And if I will take the modulus of or the absolute value of this sequence, then it will converge to the absolute value of an. But not conversely. Whatever the sequence, whatever the result that we have discussed, but not like this thing that is not going to be true for converse. It means an is not convergent. So let's say if an is not convergent, it means my an sequence an that I can consider like this. Okay, this is my one of this sequence. Then if I will take the absolute value, so an absolute will go to 1 only, because this is what? If I will take the absolute value of this, then it is nothing but 1. And okay, this is nothing but I will take it as the sequence that is 1, and it is going to be convergent because it is 1 1 1, and up to 1 it is going to be convergent. It is finite. Okay, so the sixth result is what that we can discuss. That is what? If an tending to 0, or the modulus value of an tending to 0, double implies that an is tending to 0. It means if any of the sequence is converging to 0, it means its modulus value or its mod value is converging to 0, or its mod value is converging to 0. It means if and only if that sequence is going to 0 or sequence is converging to 0. Okay, then I can take the maximum value of an and bn. So if I will take the maximum of this sequence, it is nothing but the maximum of a and b. It will go to the maximum of a and b, as let's say the maximum of an and bn. Okay, let's say an, the maximum of an and bn is going to be, let's say, some an plus bn plus what? An minus bn divided by 2. So we can just using this result, we can just simply write it as what? An tending to a plus bn, and next it is what? A minus b over 2. Okay, and this is nothing but the maximum of a and this. So if I will take the minimum, same as the minimum, so as this, if I will take the minimum of an and bn, it is going to the minimum of a and b. Next, that eighth result that we can discuss. Okay, this was the seventh result. Eighth result that I can discuss: if you have an sequence which is less than of some k, it means it implies that a is less than of k. Okay, if a is strictly less than of k, then it implies that a is also less than or equals to k. Let's say 1 minus n, it is 0, because what is the limit of this? That is 0. So it is strictly less than of 0. Okay, we can take one example here. So let's say my an greater than or equals to k. It means that here an greater than or equals to k, or an is strictly greater than of k, then it is also like that an is strictly or not like equals to strictly or greater than equals to k. Okay, let's say my an sequence is less than of bn sequence. It means that the limit of a, that is what? The small, or the, you can say, the limit of this an, that is a is less than of b, which is the limit of bn. Okay, if an is strictly less than of this, then the result is also the same. It is less than or equals to. Or the same result if an bn, if an is less than or an is greater than equals to, then here it is what? A is greater than of b. If I will write like this, an less than, or let's say strictly greater than to bn, then again the same result will be here. Now you can see these are some important algebra of the sequence. Okay, let's say we can take one question here. So if your an
bn tending to 0, it does not implies that an tending to 0 or bn tending to 0. This is one of the property. So now from here, let's say my an into bn is equals to what? 0 0 0. So it is what? My 0 sequence. So an is what? Something like let's say 1 0 1 0. Okay, one term is 1 and another one is 0. I will take this, and if I will take bn, okay, it is what? 0 1 0 1. Okay, here it is what? Oscillating. It is also oscillating. It is not like that these both sequences are going to like yeah, these both sequences are convergent. It is not convergent. It has limit point 1 and 0. Again, it has limit point also 1 and 0. No unique limit point. So like limit does not exist for this. So it is not okay. If you will multiply these both things, an into bn, then it is going to be convergent. It will converge to 0. Okay, and it is not like that. If it is converging to 0, then it means that an and bn will converge to 0 also. Okay, this is what the result. It means that's why I have told to you that in this result there are the thing implies only here to here, not here to here. Okay, it means the converge is not true. If any of the sequence is converging, or the addition of the sequence is converging to, let's say, a plus b, so it is not like that. If it is like converging to a plus b and I will divide any of the number, let's say 5, it means 2 plus 3. So it means one of the sequence will converge to 2 and one of the sequence will converge to 3. It is not like that. Okay, so keep in your mind it here it is not the converse is not true. Okay, next that we are going to discuss, that is what the Cauchy's first theorem, that is very helpful in the limiting case, and whenever you are going to find the limit, so it will help you a lot. That is what the Cauchy's first theorem. Okay, then after we'll discuss the Cauchy's second theorem. So what is the statement is, first, if you have any of the sequence an which is converging to a, then it means, okay, then the limit. So basically we are finding the limit, then a1 plus a2 up to an divided by n will go to n. So if you have any of the if you have any limiting value that is something like that, just find the limit of this a2 a3 or whatever an given here divided by n. Just find the limit of this particular an. Okay, just find the limit and tending to infinity of this an. Whatever the result it is, let's say it is going to a, then this result will also go to a. This is called the Cauchy's first theorem. And now let's say what is the meaning of Cauchy's second theorem. Now what is the statement of Cauchy's second theorem? That is what, if you have, okay, if an is sequence of, okay, let's say an is sequence of positive real number, okay, such that an converging to a, this sequence an converging to a, it means that if you are going to taking a1 a2 up to an, it is 1 by n, then it will also converge to a. If you have any kind of this thing and you are going to find the limit of this particular expression, then just take the limit of this particular element only. Then after you will say that yes, the limit is this. Okay, then we have some like root test or the finding the limiting case. So whenever if you are if you want to calculate limit n tending to infinity of an plus 1 upon an, where an is what, your sequence, that is positive real number sequence, then it is equals to 1. Okay, let's say not equals to 1, if it is equals to a. Okay, now it is depending, okay, what is the limit of that an, it will depend to the value of this. Okay, so from here, if my a is greater than of 1, it means the limit of this sequence an is going to be infinity. Or if a is less than or equals to 1, it means that, or not equals to 1, let's say less than of 1, then you are saying that the limiting case or the limit of this an is 0. So this is what the one of the important result. If you really want to calculate the limit of any of the sequence, then just find the value of an plus 1. Okay, this is what an plus 1, and the next term divided by previous term, and take the modulus value and take n tending to infinity. And if you are getting any of the finite number, this is what, this is a
finite number, and if it is greater than of 1, then limit of that sequence is going to be infinity, or otherwise the limit of sequence is going to be 0 if it is less than of 1. Okay, next, okay, these are the Cauchy theorems. Okay, next we will discuss the Caesar's theorem. That is what, okay, Caesar's theorem. So what is the statement of this theorem? Just see the statement. If you have any of the sequence which is converging to A and any of the sequence which is converging to B, then here we have what, A1 Bn plus A2 Bn minus 1 up to, let's say, An minus 1 B2, okay, plus let's say An, and it will be Bn divided by, okay, so if any of the sequence like this, here I will divide it, no, I'll not divide it here, then it will go to, if it is a sequence, then if it will go to A into B. Now if, let's say, I want to calculate n tending to infinity of, let's say, An power 1 by n, if it is A, then the same thing, if A less than, it is a finite quantity here, okay, it's a finite quantity, then A is less than of 1, then the limit of An is going to be 0, and if A is greater than of 1, then what, the limit of An is going to be infinity. This is what the Caesar's theorem here, and you can apply to find the limit, or you will apply this case to this kind of result here. Okay, yeah, this is one of the separate thing, and this is one of the separate result. Okay, use this result for this kind of, if you have any kind of sequence like this, then it will go to An, and if you have any of this sequence, and either you can use this test to calculate the limit of the sequence, or you can use this limiting value or this form of the sequence, so that you can get the result. Next, I will explain squeeze or sandwich theorem, that is very popular, that is called sandwich, okay, sandwich theorem. Yes. Now, what is the meaning of sandwich theorem? It is something like that related to the sandwich. So let's say if An, Bn, and let's say Cn are B, three real sequences such that An less than of Bn, okay, less than of Cn for every n. So with, let's say, limit n tending to infinity of An is equals to limit n tending to infinity of Cn is equals to n. It means for this and for this, limit is L. So it will implies that this is what, then the limit n tending to infinity of Bn will exist, and limit n tending to infinity of Bn will also L. It is something like that sandwich. If you have An, its limit is L, Cn, its limit is L, and here I got An less than of Bn less than of Cn. If it is satisfying this thing and it has limit L, it means definitely it will have limit L from here and here. So Bn, it has the limit L for all these cases. This is what the sandwich theorem. We can take one example to understand this theorem. Okay, so just we'll just find out the limiting case, so that we'll use these properties so that I can explain you this in the good way. So see here, I'll write the example. So I'll use these properties. Okay, find the following limit of the function, or let's say sequence, if exist. So first one is that find the limit n tending to infinity of root of 1 square, 2 square, okay, up to n square, that we can easily find. So now we have what, limit n tending to infinity or nth power.
then it is nothing but what? It is nothing but summation of n square. And I can just write it what? What is the summation of n square or the square power? That is nothing but simple. I will write limit n tending to infinity. It is nothing but n plus 1, n plus, or sorry, 2n plus 1. Okay, 2n, sum of squares number divided by 6 power 1 by n. Now we want to calculate the limit of this. Now how can I proceed? So just take limit n tending to infinity. So if I will write from here, if I will take n common from here, it will be n power 1 by n. Okay, and if I will take from here, if I will take 1 second, from this, if I will write n outside, from here if I will write n outside, then it will be 1 by n again. And from here if I will take 2n, then it will be 2 power 1 by n. Then it is nothing but 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by 2n power 1 by n divided by 6. Now from here, what? This is, we know that what is the value of limit n tending to infinity and n power 1 by n. Okay, or let's say what is this? It is nothing but n square power 1 by n. It is going to be 1. Because of that, it is also going to be 1. So this is nothing but limit n tending to infinity, and this is also going to be, this is going to 2. So this will be 2 power 0, and again it will be 1. So from here, it is nothing but 1. All the values are 1 here. And this is what? 1 plus 1 by n power 1 by n. And this is what? 1 plus 2 into n power 1 by n divided by 6. Now I will tell you one formula. That is what? If you have any of the function like this, f of 1 plus f of x power g of x, and you are applying the limit n tending to infinity, and you are getting the 1 power infinity. If you are getting this, okay, if you are getting this, let's say this is what? Infinity. Then 1 plus 1 upon infinity. Okay, this is what? 1 by infinity. Or yes, from here you are getting what? 1, and this is what? 1 power 0. Okay, let's say 1 power 0. It is also indeterminate form. Then just simply write like this. Just apply limit n tending to infinity to f of x and g of x. Okay, just e to the power f of x into g of x. So it is nothing but the simple case. Then we can use this limit. So it is what? The limit n tending to infinity here. Then it is e to the power of limit. So it is what? 1 by n power 1 by n. So this is 1 by n into 1 by n. This is going to be 1 by what? This is going to be and n tending to infinity. And this is what? Again e to the power. Okay, divided by 6 is there. E to the power limit n tending to infinity 1 by 2n into 1 by n. Now it is limit n tending to infinity e to the, this is 1 by n square. 1 upon infinity square, that is what? 0. It is also e to the power 0 divided by 6, and it is going to be it is going to be, oh yeah, it is also 1 power n. 1 power n here, and limit n tending to infinity is also applying to this also. So it is 6 power 0. Then the limiting value is going to be let's say 1. Okay, this is what the result. We can use this result. Now I will use, this is what that result you can use in that case. Okay, this is one of the important result. Next, if I will tell you that how can we use the sandwich theorem here. So if I will take the second question, and if I am going to find the limit n tending to infinity n plus sine n square, n plus sine n square divided by n plus cos of n. So from here I can write just like simply, this is what? Sine n square. Okay, I will take just n outside, then this is limit n tending to infinity. So I will write like this: 1 plus sine over n square divided by n. Okay, plus from here it is 1 over cos of n divided by n. So from here it will get cancelled. So by sandwich theorem, I will just take it as, okay, now from here if it is what? Infinity, and it will go to 1. Why? Because this will go to 0 and this will go to 0. Now how it will go to 0, or how we'll proceed with this? Let's say, so by sandwich theorem, that is what?
Sine n square by n. Okay, just what is the meaning of sine n? It is bounded with -1 and 1. It is simple. If I'll make the square of this, then it is again, it means it is not sine square, it is sine n square. Again it will be bounded with 1 and -1. Okay, then what if I divide by n? Then this is what, n and n. So it means my sine n square is bounded with 1 by n square. It is less than of this. And if I'll take n tending to infinity, then this is going to 0. So from here, this is going to 0. Now again take the cos of n. So cos of n is bounded with 1 and -1. If I'll take divide with n, again as n tending to infinity, again this will go to 0. So from here it will also go to 0. This is what the sandwich theorem. We can use this here. Okay, now I will use one more. I'll solve one more question here. So just let's say if I want to calculate the limit n tending to infinity of n factorial over 2 power n. Okay, 2 power n, and let's say its limit is infinity. Why its limit is infinity? So what is this? I will use, this is, let's say this is my an, that is n factorial 2 power n. I will just use this an plus 1 divided by an tending to infinity. So just find this limit n tending to infinity, an plus 1, that is what, n plus 1 factorial divided by 2n plus 1 into, let's say you can write 2n, and this is what, my n factorial. Now from here I will take limit n tending to infinity, and this is what I can just I can write like this. It is what, n plus 1 and n factorial, and this is what, 2n into 2 into 2n and n factorial. This will get cancelled from here. It is nothing but n plus 1 divided by 2. And if I will take n tending to infinity, it will be 0. If it is 0, means it is greater than of infinity. So let's say this is my a. So from here, if my a is greater than of this, then the limit, or let's say the limit of an, or limit n tending to infinity of n factorial over 2 factorial is infinity only. Okay, it will not be finite. So this is what the case here. So this is all about the limiting case. Let's say one more example here. So if you really find out the value of limit n tend to infinity and 1 upon root n like this, if it is root of 1 plus root of 2, okay, root of 3 plus root of 5, 1 over root of, let's say, 5, or yes, it is 3, 5 and root of 7, and 1 upon root of 2n minus 1 plus root of 2n plus 1. If you have any of the limit, I will tell you the two tricks. So first one is what? This is what? Just take the limit of, n tending to infinity, whatever you have. Okay, you have this thing, just take it for an plus 1 upon this, or otherwise whenever you have this kind of thing, your result is what? Just I will tell you what is the difference of all these things. So the difference in all these terms, let's say it is 2. Whenever you will have the equal differences in these types of thing, or you have this kind of result here, then this limit case, limit n tending to infinity. So the limit n tending to infinity, let's say this is my an, it will be 1 upon root d, if whatever the d is equal. Okay, d is nothing but my difference. So if it is difference, then it will be equal. So the limit, so here limit n tending to infinity of an, that is what, 1 upon root. This is something, answer that you can easily find using this. Okay, so these are the result, and these are some sort of question that we can solve using this, or using the property of this, then we can find out the solution. Okay, so this is all about the algebra and this, and now I will discuss whatever the Cauchy sequence here. Cauchy sequence is something like which is a convergent sequence. Okay, so every Cauchy sequence is convergent, and every convergent sequence is Cauchy in real number, but I will just define what is the Cauchy sequence here. So just Cauchy sequence, and what is the definition of Cauchy sequence. So a sequence an of real number is said to be a Cauchy sequence. Okay, a Cauchy sequence if for each
epsilon greater than 0, there exists n belongs to the natural number such that if you will define this definition like this, an minus am less than epsilon for every n and m which is greater than of this n is nothing but any natural number. So then you will say this is nothing but my Cauchy sequence. If you have this interval from here to here, it is making the cluster. So if it is making cluster and it is making limit here, then it is what your Cauchy sequence. The result of Cauchy sequence is that a real sequence an is convergent. So for real number, for real, let's say real sequence, if it is convergent, then it is a Cauchy, okay, then it is a Cauchy sequence. Okay, if it is a Cauchy sequence, then it will be a convergent sequence. Okay, this is what the result here. So in complete metric space, it is not like that. I am talking about only for the real number. This result applicable for real number space. I'm not talking about any of the metric space. If we will go to Rn space, then it will not work. You have to proceed with that only. Okay, these are some definitions are related to the Cauchy sequence. So in your real number, we'll just say if your sequence is convergent, it will be Cauchy sequence. Okay, this is what some sort of result here that we can use here. Now, let's say one note point that I want to make here. So if you have note point, if you have any of the sequence of the form, let's say xn is equals to alpha of xn, okay, alpha of xn minus 1 plus beta of xn minus 2. If you have any of the sequence of the form like this, then what will happen? If you are going to taking the limit x tending to n tending to infinity, limit n tending to infinity to xn. Okay, this is what your xn, that is nothing but, let's say my an is nothing but 2 an minus 1 plus 3 an minus 2. If it is any sequence is defining like this, then the limit of that xn or an is nothing but beta x1 or whatever you will have here x0. Okay, they will define x0 and x1 here. Then beta of x1, x2 divided by alpha plus 2 beta. This will be the limit. Okay, this is one of the result here. So this is what the thing here. If you have any of the Cauchy sequence for real number, it is necessary that okay, for the Cauchy sequence, keep in your mind that we are discussing only in the real number. We are not talking about the any of the any of the matrix space. So this is what all about the limits and its properties, and basically the algebra of sequence, and also the algebra or the basically the formulas how to find the limit and limiting value of the sequences. इंट्रोडक्शन फॉर सीरीज. सो सीरीज क्या होती है? तो सीरीज एक्चुअली क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है ना, ये जो सीक्वेंस होता है, अगर हम इसको एक सीक्वेंस लेट करते हैं तो इस सीक्वेंस का सम होता है. सीक्वेंस अगर मैं कहूं तो इस सीक्वेंस को ऐसे लिखा जाता है un u2 u3, तो ये इस टाइप से लिखा जाता है. बट अगर यहाँ पे इसमें मैं अगर इन सबको टर्म्स को ऐड कर देता हूं तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस. ओके, कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है इसमें. बस सीरीज में क्या होता है, सारा सम होता है सारे टर्म्स का, और थोड़ा डिफरेंस ये भी होता है कन्वर्जेंसी में. कांस्टेंट जो सीरीज सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, बट जो कांस्टेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे. सो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो अब ये फाइनाइट सीरीज है ना. दो तरह की सीरीज कह सकते हैं आप, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट मतलब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, एंड फाइनाइट टर्म्स अगर है तो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे. तो देखो यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो सीरीज को डिनोट करने का तरीका ये होता है, समीशन की फॉर्म में लिखा जाता है n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. सो ये भी एक सीरीज हो जाएगी. ओके, दिस इज द एग्जांपल. एंड अगर मैं बात करूं, ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा. ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. ओके, इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट,
ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/n। ओके, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं फोर्थ पे, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, वही लिख जाएगा, ये साइन 1 हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा साइन 1/2। ओके, ये हो जाएगा साइन 1/3, यानी कि n जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें, दिस इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज। आगे हम बात करेंगे पॉजिटिव सम टर्म के बारे में। और ये जो सीरीज है, सीरीज को कहते हैं सीरीज ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की सीरीज है जो कि आर से बिलोंग करता है, उसके टर्म्स जितने भी हैं। हम यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं तो ये भी एक सीरीज है जिसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 पावर n पावर m। तो ये जो सीरीज बनेगी, अगर आप n की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस आ जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 1/3, ओके, प्लस 1/4। इस टाइप से ये सीरीज जो है वो आगे से आगे चलती जाएगी। तो ये सारे जो है सीरीज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे कॉस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज। तो ये सारे समीशन की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको सीरीज कहते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। सीरीज के पार्शियल सम का जो सीक्वेंस होता है उसको हम एसओपीएस कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट सीरीज जो होती है, ओके सॉरी जो फाइनाइट सीरीज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में अगर कोई सीरीज है, मैं लिखता हूं यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3, अगर इस टाइप से अगर आपके पास में कोई सीरीज है अप टू n टर्म, तो अगर इसके फर्स्ट टर्म का समीशन की बात करता हूं तो वो तो u1 खुद ही हो जाएगा। अगर सेकंड टर्म के समीशन की बात करता हूं दैट इज द u1 प्लस u2 हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड टर्म के समीशन की बात करता हूं तो वो u1 प्लस u2 प्लस u3 हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेके un तक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इसका समीशन हो रहा है, इसका जो समीशन है, इसके समीशन की जो सीरीज बन रही है, यानी सॉरी इसके समीशन की जो सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, इस टाइप से डिनोट किया जाता है। अब इसके समीशन की जो सीक्वेंस बन रही है उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, S1 S2 S3। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इसको अपन क्या कहते हैं, SOPS कहते हैं, यानी कि सम ऑफ पार्शियल ना सॉरी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, यानी कि सीरीज के पार्शियल, मतलब एक बार इसको लिया, फिर हमने इसको लिया, फिर हमने यहां तक लिया, तो ऐसे पार्शियली सम करके उसकी सीक्वेंस बनाई जाती है, उस सम की सीक्वेंस उसको हम कहते हैं SOPS। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका अगर हम पार्शियल सीक्वेंस की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे जब हम यहाँ पे वन पुट करते हैं तो ये जो सीक्वेंस मिलती है ना, दिस इज सीक्वेंस। अगर मैं इसको सीक्वेंस बनाता हूँ या फिर ये जैसे सीरीज दी हुई है, तो ये जो सीरीज आपको मिल रही है दैट इज द वन। ओके, यहाँ पे मैं वन पुट करता हूँ तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/1/2। ओके सॉरी 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, प्लस आगे आ जाएगा 1/3/4। तो यार इस टाइप से ये टर्म, ये सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, इस सीरीज का एसओपीएस फाइंड करना है, तो मैं क्या कहता हूँ S1। तो S1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे S2 के बारे में, तो यार S2 जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, S2 को लिखेंगे 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2/3। आगे आप 1 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ओके, इसी टाइप से अगर मैं S3 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/1.2, ये हो जाएगा 2.3। और इसी टाइप से इसका थर्ड टर्म को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और Sn की बात करेंगे तो ये पूरे की पूरी सीरीज का क्या हो जाएगा, वापस सम हो जाएगा। तो यार ये इस टाइप से आपको सीरीज मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे इसको क्या होता है, एसओपीएस में थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए इसकी कुछ एक टर्म्स को हम थोड़ा है ना कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट कर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दिस इज -1/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 1/2 कॉमन लेंगे और फिर इसको यहाँ पे 1/3 रहेगा और उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। ओके, इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 - 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे 1 - 1/5 हो जाएगा। और जो nth टर्म होगा उसको क्या लिखेंगे, 1 - n+1। आप देखें यहाँ पे अगर ये S1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 2 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 4 आ रहा है, मतलब n है तो n+1 आएगा। तो अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, यानी कि यहाँ पे 1 - 1/, यानी कि ऐसा लिख दो आप S1 S2 S3 S4 से लेके Sn तक बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, SOPS कहते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ओके, फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/3, ये हो जाएगा 1 - 1/4 अप टू 1 -
1 माइनस ये हो जाएगा 1/n+1। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एसओपीएस कहते हैं। तो इस टाइप से आपने एसओपीएस का कंसेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से समझ लिया है। सो नाउ हम बात करते हैं सम ऑफ सीरीज के बारे में। तो सीरीज का जो सम होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सीरीज का सम कैसे फाइंड किया जाता है। सीरीज के सम फाइंड करने के लिए आपको उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करना होता है, यानी कि आपको nth ना इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो देखिए आइए यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है और उस सीक्वेंस का आपको सम फाइंड करना और उसी सीक्वेंस से उसकी सीरीज का सम फाइंड करेंगे। कैसे, देखो अगर मैं कहूं यहाँ पे ये जो n स्क्वायर एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ओके ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और आगे 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये सीक्वेंस आगे चलेगी। अब इस सीक्वेंस का एसओपीएस में फाइंड करता हूं तो S1 आ जाएगा इसका 1 स्क्वायर, S2 जो है वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, S3 जो है वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके है ना S1 S2 फाइंड किया जाएंगे। अब हम एसओपीएस की बात करते हैं तो यार एसओपीएस क्या हो जाएगा S1 S2 S3, तो ये इसका क्या हो जाएगा SOPS हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ओके, अब क्या करना है, SOPS लिखेंगे हम यहाँ पे। जब हम SOPS लिखेंगे तो यार ये SOPS का SN क्या होगा, SOPS का जो SN होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके लास्ट में n स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि आपको इनफाइनाइट तक का फाइंड करना है तो n टेंस टू इनफाइनाइट आपको पुट करना है। तो Sn मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर होता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि यहाँ पे n स्क्वायर का जो समीशन होता है वो कितना होता है n+1 2n+1/6 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो जब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो यार इसका यूज करने पे ये क्या मिलेगा आपको n मिलेगा, लिमिट n टेंस टू, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे समीशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये आ जाएगा आपके पास में n+1 2n+1 ओवर ये हो जाएगा 6। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, अगर n को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा n, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो n³ बन जाएगा बाहर और अंदर ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1/n/6। पर फिर भी हम जब इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे तो अपने को आंसर इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो दिस इज द सम ऑफ सीरीज। ये इस टाइप से सीरीज का सम फाइंड किया जाता है। कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं IIT JAM के लिए, वो सारे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज के बारे में। सो सीरीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JAM और यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है क्या होता है। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने कंसेप्ट समझाया था SOPS के बारे में, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो ये जो SOPS का कंसेप्ट है, यू हैव टू नो अबाउट दिस, है ना, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द SOPS, बिकॉज ऑफ दैट यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी नॉलेज ऑफ SOPS। ओके, सो यहाँ पे SOPS के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सीरीज वाली प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर देखें उसको, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। सो नाउ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज में, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब उसका SOPS कन्वर्जेंट होगा। मतलब सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ द SOPS इज कन्वर्जेंट। अब SOPS एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी क्या होती है कि फाइनाइट टर्म मिलता है तो आपको कन्वर्जेंस लगाना है और इनफाइनाइट टर्म मिलता है तो आपको डाइवर्जेंस बताना है। ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के रूल्स होते हैं। ओके, इसी टाइप से हम बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में। तो अगर सीरीज डाइवर्जेंट है होगी कब, जब SOPS होगा उसका डाइवर्जेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मैं कहता हूं कि एक सीरीज UN जो है वो है 1/n × n+1। तो यार इस सीरीज को जब लिखते हैं तो ये मिलता है 1/2, 1 पुट करने पे ये हो जाएगा 1/2 × 3 + 1/3 × 4। इस टाइप की आपको एक सीरीज मिलती है और इस सीरीज का आपको SOPS फाइंड करना है। SOPS फाइंड करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे आपको S1 लिखना होता है, S2 लिखना होता है, S3 लिखना होता है। मतलब क्या होता है कि S1 S2 का मतलब यहाँ पे एक्चुअली इसकी सीरीज जो बनती है, सीधी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसकी सीरीज इसकी सीक्वेंस जो बनती है क्या होती है कि फर्स्ट टर्म
का सम मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब 1/2 ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/3, सॉरी 2 into 3। ओके, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड S3 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1.2 यानी कि 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस ये हो जाएगा 3 into 4। तो ये इस टाइप से एक सीक्वेंस बनती है, यानी कि इसके सारे टर्म्स की एक सीक्वेंस बन जाती है। तो अब इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यार इस सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, और nth टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे 1-1/n+1। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सेकंड टर्म मिलेगा। तो ये इसको कहते हैं SOPS, यानी कि पार्शियल। पहले हम इसका सम करते हैं फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में इसका करते हैं, थर्ड टर्म में इसके मतलब जो 3 है उसका करते हैं। तो ये SOPS होता है। अब इस SOPS में यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो यार ये जो सीरीज है इसकी कन्वर्जेंसी चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा था आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे 1-1n+1 के अंदर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो जब ये पुट करेंगे तो 1-1/n यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1+1/n मिल रहा है। और जब ये कॉमन लेंगे यहाँ से तो सीधा सा दिख रहा है कि ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 1, और 1 जो है वो फाइनाइट है, इसलिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये जो सीरीज है इट विल बी कन्वर्जेंट। ओके, मतलब SOPS कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ओके, सिमिलरली अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। जैसे सीरीज अगर ऑस्किलेटिंग है, कब ऑस्किलेटिंग होगी, जब SOPS भी ऑस्किलेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सीरीज UN जो है उसमें हम ले लेते हैं सीरीज है समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -1 n। तो अगर इस टाइप के हम सीरीज लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जो सीरीज बनती है दैट इज द -1+1 इस टाइप से इसकी सीरीज बनती है, और ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हम यहाँ से इसके सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो सीक्वेंस जो बनेगी इस सीरीज की वो हो जाएगा -1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, ये हो जाएगा ऑस्किलेटिंग। अब ये ऑस्किलेटिंग कैसे होगा हम इसका पता लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले S1 लिखेंगे, फिर S2 लिखेंगे, फिर S3 लिखेंगे। तो मतलब S1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म का यहाँ पे सम हो जाएगा, दैट इज द -1। और उसी टाइप से S2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1+1 जो कि 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए फाइंड करेंगे, जो वापस आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे SOPS जो आप निकालेंगे वो SOPS का जो सीक्वेंस होगा वो -1 0 -1 0 ये सीक्वेंस आपको मिलेगी। और ये हमको देखते ही पता चल रहा है कि -1 आ रहा है व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। ओके, सिमिलरली 0 आ रहा है व्हेन n इज इक्वल टू इवन। तो यार इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम कहते हैं ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस। तो यार ये ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है और SOPS ऑस्किलेटिंग है। तो ये जो हमारे पास में एग्जांपल है दिस इज आल्सो ऑस्किलेटिंग। सो इस टाइप से हम SOPS के कंसेप्ट से सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं, डाइवर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज सीरीज से रिलेटेड टॉपिक में ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, आपको इस टाइप का अगर कोई सीरीज मिलता है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक टर्म मिलेगा 1 + a प्लस उसका स्क्वायर होगा, फिर आगे क्यूब होगा, है ना, ऐसे n पावर में चलता जाएगा। सो दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो केस है उस केस के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है इफ a इज लेस देन 1। यहाँ पे जो a गिवन है वो अगर 1 से छोटा है, उसका मॉड अगर 1 से छोटा है तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको SOPS जो फाइंड करना पड़ेगा वो SOPS क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं ये ऐसे छोटा है देन द SOPS हम लिखेंगे देन द SOPS। तो ये SOPS क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आप वहां जाके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो SOPS है देन द SOPS ऑफ सीरीज ओके इज SN।
जो इसका जो एसओपीएस आएगा वो एसएन आ जाएगा, मतलब 1a1 है ना, 1 + a+a² + a³ ऐसे करते करते ये हो जाएगा an तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि एसएन इसका अगर मुझे फाइंड करना है तो एसएन ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए क्या होता है 1 + an, और ये हो जाएगा 1 + a हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे माइनस आएगा, 1 - an हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - a व्हेन a इज लेस देन 1। ओके, अब इस कंडीशन में a अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट में लिमिट अगर पुट करता हूं इसी में, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे 1/1 - a मिलेगा। सो दिस इज दिस सम ऑफ सीरीज। तो आपको अगर सीरीज का सम फाइंड करना है तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले का यूज करके सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर एसओपीएस कन्वर्जेंट, क्या कंडीशन है, अगर उसका एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो उसकी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये इसमें कंसेप्ट काम करता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है आपके पास में इफ a इज लेस ग्रेटर देन 1। तो जब a जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एसएन जो आपको मिलता है वो an-1 a-1 हो जाता है। इसमें अगर आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करते हैं, ओके, तो क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मिलता है ये जीरो हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे, ये यहाँ पे 0 - 1, और ये एक्चुअली आपको इनफाइनाइट मिलेगा ना, कि एस एन पे अगर आप n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये आपको इनफाइनाइट मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब उसका एसओपीएस जो है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो उसकी सीरीज भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यही एसओपीएस है, सेम एसओपीएस का यूज करके हम यहाँ पे काम करेंगे। अब अगर आपके पास में a इज इक्वल टू 1 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके ट्राई कर लेते हैं। un अगर आपके पास में कोई सीरीज है और आपको दे दिया n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1^n-1 मान लेते हैं, ऐसे कोई सीक्वेंस है, और इसका एसओपीएस फाइंड करेंगे तो s1 क्या आ जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा, s2 जो आएगा वो 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे s3 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं sn के लिए तो वो क्या हो जाएगा, एस एन में 1 + 1 + 1 ऐसे करते करते nth टर्म तक वो चलता जाएगा। इसी टाइप से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर आपको निकालना है इसका तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस एन जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, एन nth ना, 1 टू इनफाइनाइट 1 + 1 + 1 + ऐसे n बार मिल रहा है। तो अगर आप उसमें पुट करेंगे तो n हो जाएगा। तो यार ये सीरीज जो है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसमें एक चीज पता चलती है, नोट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज convergent बट सीरीज इज नॉट। मतलब क्या हो गया कि जितनी भी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, यानी कि 1 2 + 2 + 2 1 + 1 + इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस अगर कांस्टेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी, बट अगर सीरीज कांस्टेंट है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, यानी कि वो डाइवर्जेंट होगी। तो अगर जरूरी नहीं है डाइवर्जेंट भी हो, कन्वर्जेंट हो भी सकते हैं, पर वो है ना फिक्स नहीं है, ये चीज है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड केस के बारे में। तो थर्ड केस जो है उसमें क्या कह रहा है, ए अगर आपके पास में -1 है तो यार इसका भी सीधा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर a -1 है तो क्या होगा। ओके, तो यार हम यहाँ पे un एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1^n-1। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेंगे तो s1 आपको 1 मिलेगा, बट s2 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब एक बार प्लस मिलेगा, एक बार माइनस मिलेगा। s1 n की n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे तो ये टर्म आपको मिलते जाएगा। और इसमें आपका जो एसओपीएस होगा वो 1 0 ओके 1 0 1 0 इस टाइप से मिलेगा। और ये जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, ऑस्किलेटिंग सीरीज होती है। ओके, क्योंकि आपको 1 मिल रहा है इफ n इज इक्वल टू ऑड एंड 0 मिल रहा है इफ n इज इक्वल टू इवन। तो यार इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस होती है, इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस है उसको हम एक ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। और अब इसका एसओपीएस जो है वो ऑस्किलेटिंग है, तो यार वो सीरीज भी कैसी होगी, ऑस्किलेटिंग सीरीज होगी। आई होप आपको ये पूरा ज्योमेट्रिक सीरीज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो सीरीज की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं, पी टेस्ट। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पी टेस्ट होता है वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज सीक्वेंस के लिए होता है।
अब हाइपर हार्मोनिक सीक्वेंस कह दो या सीरीज कह दो, एक ही बात है। उसको हम यहाँ पे समझेंगे। एक्चुअली हाइपर हार्मोनिक सीरीज बोलना चाहिए यहाँ पे। हाइपर हार्मोनिक जो सीरीज होती है उसके लिए ये यूज होता है। तो समझते हैं ये क्या होता है। अगर आपको हमारे सीरीज पे बेस्ड सारे टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो IIT-JEM की प्लेलिस्ट में जाके आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। सो नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में। सो यार आपके सामने जो यहाँ पे समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इज 1 अपॉन n पावर p जो सीरीज होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सीरीज को एक्सपांड करता हूं तो ये हो जाएगा 1 पावर p प्लस ये हो जाएगा 2 पावर p प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 पावर p 1 अपॉन 4 पावर p और ऐसे जाएगा तो ये अप टू n टर्म तक चलेगा और ये हो जाएगा p। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम कहते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब इस हाइपर हार्मोनिक सीरीज में कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को कैसे चेक किया जाता है, जब भी आपके पास में जो P होता है अगर ये P ग्रेटर देन 1 होता है तो यार वो जो है वो कन्वर्जेंट होता है सीरीज। अगर ये सीरीज की बात करें P अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और P लेस देन इक्वल 1 है तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। बस सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बस ये जो होता है वो आगे के जो हम टेस्ट यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट वगैरह उन सब में यूज होता है, क्योंकि वहां पर हम VN एक एज्यूम करते हैं, एक हम उसकी जो सीरीज होती है उसके एज्यूम करता है, और वो VN जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, उस VN की कन्वर्जेंसी इस P टेस्ट से चेक की जाती है। सो नो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कोई ऐसी कोई सीरीज है, सीरीज अगर हम बात करें सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, अगर आपके पास में सीरीज n स्क्वायर है। अब इस n स्क्वायर की कन्वर्जेंसी अगर मुझे चेक करनी है तो हम क्या कहेंगे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 n पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो n पावर -2 है इसकी पावर यानी कि p, सो यार जो p है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये कैसा है, लेस देन इक्वल लेस देन 1 है। सो यार ये क्या कहेंगे, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, हम यहाँ पे कह रहे हैं n क्यूब अपॉन n+1। अगर हम इसकी चेक कर n+1 नहीं लेंगे, यहाँ पे ये सीरीज लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई गिवन है, अगर आपको इसको चेक करना है तो क्या कहेंगे, हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मिलेगा समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा n स्क्वायर, और n स्क्वायर को अगेन हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। इसी टाइप से आप कोई भी सीरीज ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि n पावर 3/2 अगर ये कोई सीरीज है, तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज में आपके पास में p जो है वो क्या है, 3/2 है, और जो p 3/2 है और 3/2 इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। तो इस टाइप से हम इसकी कन्वर्जेंसी को चेक करते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सीधा p की पावर को देखना है, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज गिवन होगी और वो सीरीज होगी वो UN होगी। तो क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि UN अगर कोई एक सीरीज है और VN उसकी जैसी एक और पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो क्या होगा, समीशन UN यानी कि VN सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। VN सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड UN इज लेस देन इक्वल 1। UN जो है वो लेस देन इक्वल 1 है तो यहाँ पे UN कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली अगर VN डाइवर्जेंट है और UN जो वो लेस देन इक्वल्स 1 है तो UN भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ऐसे समझते हैं, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उन एग्जांपल्स इसको बिल्कुल इजीली समझा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल हम इसको समझते हैं। हमारे पास में कोई सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। अगर इस सीरीज के आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दी VN क्या होगा। अब देखो ये जो हमारे पास में सीरीज है दिस इज UN। अब इस ये UN हो गई तो VN हमको ना एज्यूम करना पड़ेगा। तो VN एज्यूम करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, आप क्या करें, जनरली 99% सीरीजेज में आपको कांस्टेंट अगर आप रिमूव कर देंगे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको रिमूव करेंगे तो आपको VN मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था हाइपर हार्मोनिक सीरीज में P ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, P ग्रेटर देन इक्वल्स होता है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पे P की वैल्यू ग्रेटर
देन 1 है, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब जो हमारे पास में Vn सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, और Vn कन्वर्जेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, Un इज लेस देन इक्वल Vn। Un जो वो कैसे यहाँ पे लेस देन है ना, इससे लेस देन होगी क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है, इसमें एक ऐड नहीं हो रहा, तो ये इससे लेस देन भी है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस Un भी कैसी हो जाएगी, एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। इस टाइप से हम इसके कंपैरिजन टेस्ट, मतलब दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं दो सीक्वेंस को, एक अगर कन्वर्जेंट है और वो उससे अगर छोटी है तो UN भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक अगर डाइवर्जेंट है और उससे वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि UN लेस देन इक्वल्स VN, तो अगर ऐसा है तो वो भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेके इसको चेक कर लेते हैं। सो यार हम एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, उस एग्जांपल को समझे आप। यहाँ पे मैं हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि साइन n ओवर n स्क्वायर अगर ऐसी कोई सीरीज है, अब इसमें क्या करना, आप Vn को कैसे एज्यूम करोगे। सो यार ये Un हो जाएगा। सो यहाँ पे जो Vn होगा ना, वो Vn क्या कंसिडर करेंगे, जनरली आप क्या करें, आर्बिट्री। अब देखो यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन को हटाएं, यहाँ पे हमने आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन को हटा देता है, तो हमारा काम क्या है, हमको चेक करना है इस पी टेस्ट से, तो हमको क्या चाहिएगा, पी टेस्ट वाले फंक्शंस चाहिए। तो जनरली मैं क्या कर देता हूं, एन स्क्वायर को इसका Vn एज्यूम कर लेता हूं, और ये इससे छोटा भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है। आप लिख सकते हैं ये जो साइन है वो ऐड हो रहा है, उसमें डिवाइड कर रहा है, साइन तो ऑलरेडी छोटा होता है 1 से, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है वो कैसी है, 2 आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये कन्वर्जेंट है तो दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा रूट ऑफ n प्लस 1। अब इसको अगर मैं चेक करता हूं, ये छोटा होगा किससे, Vn से, और Vn जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन रूट n। अब रूट n जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, n पावर 1/2, और 1/2 जो होता है वो लेस देन 1 होता है। सो यार क्या कहेंगे, ये डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस टाइप से हम इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। ओके, एक और सिंपल सा एग्जांपल है, हम इसको आगे थोड़ा सा समझ सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। अगर आपके पास में ऐसा है n स्क्वायर लॉग ऑफ n, इसको अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे Vn एज्यूम करेंगे, और Vn जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और यार n स्क्वायर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो ये Un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो नोट पॉइंट क्या है, उसको थोड़ा सा समझें। सो बात करते हैं यहाँ पे नोट, एक नोट हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर आपके पास में कोई ऐसी सीक्वेंस होगी n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 पावर n ओवर n, सो ये जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, पर अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि an अगर नॉट मोनोटोनिक है, अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, नहीं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं है, सो सीरीज है ना, ये कन्वर्जेंट किस पे करेगी, ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंस टू जीरो, ये किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे कन्वर्ज करेगी, और ये कैसी होगी, बाउंडेड होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, अगर इस टाइप की कोई सीक्वेंस मिल रही है, अगर नॉट मोनोटोनिक है यानी कि मोनोटोनिक नहीं है, तो कन्वर्जेंट करेगी। अगर इस टाइप की सीक्वेंस है ना, वो कन्वर्जेंट करेगी इसकी सीक्वेंस, पर कन्वर्ज किस पे करेगी, जीरो पे कन्वर्ज करेगा, और वो बाउंड होगी 1 to 0 में, वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। हम बात करते हैं यहाँ पे दो सीरीज अगर हम लेंगे, हमारे पास में UN कोई अगर एक सीरीज है और VN भी एक कोई सीरीज है, टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। UN हमको गिवन होगा, VN हमको एज्यूम करना पड़ेगा, बट कैसे एज्यूम करेंगे हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं, अगर आप Vn और Un दोनों का रेशियो लेते हैं और उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट पुट करते हैं, ओके दिस इज नॉट सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो आपको एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर अगर आपको मिलता है तब आप इसको क्या करेंगे, Vn पे डिपेंड करेगी। इफ Vn इज कन्वर्जेंट देन Un इज कन्वर्जेंट, इफ Vn इज डाइवर्जेंट देन Un इज डाइवर्जेंट, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं कि ये कैसे डिपेंड करेगा इस पे। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास में कोई ऐसा नंबर है और हम इसको देखते हैं आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो है आपके पास में एक एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक्चुअली इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इससे होगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में अगर कोई सीक्वेंस है, जैसा आपको कहा कि अगर कोई सीरीज है 1 टू इनफाइनाइट
n+1 अपॉन n² + 1। अब इसमें क्या हो रहा है, हम un को लेट कर रहे हैं n+1 अपॉन n²+1। ये जो हमारे पास में un है, और अब क्या करना है, हमको vn कंसिडर करना है। तो देखो vn जब भी कंसिडर करते हैं तो आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो उसको हटाने होते हैं। तो यहां से मैं आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो n/n² बन रहा है, यानी कि 1/n आ रहा है। और यहां से हम सीधा पता लगा सकते हैं इसके बारे में कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय द पी टेस्ट। बट उससे पहले वी हैव टू चेक अबाउट द लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट। हमको लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट के लिए इसको चेक करना है, तो यार उसके लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फॉर लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट हम यहाँ पे un/vn करेंगे। सो un जो है हमारे पास में क्या है, n+1/n² + 1/n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे n+1 अपॉन ये होगा n² + 1 इंटू क्या हो जाएगा, n/1 हो जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n को कॉमन लेंगे, ओके आगे लिमिट भी लगाना है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है। सिमिलरली आगे बात करेंगे तो ये भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो 1/1/n हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं n² को कॉमन लूंगा तो 1/n² इंटू n/1 हो जाएगा। तो ये इससे कट होगा और ये पूरा इससे टर्म कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है। अब ये लिमिट लगाना है, आपको 1 मिला, मतलब हम क्या कर सकते हैं, we can say that this is depends upon the vn. So यार we can say that by p test the ओके बाय पी टेस्ट 1 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे जो p है ना यार, वो p जो है वो कैसा है, 1 है, और 1 आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो यार ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो यार इन इस एग्जाम ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। सो यार इसका जो एग्जाम्पल हम लेंगे, समीशन ऑफ रूट ऑफ n⁴ + 1 माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ n⁴ - 1। अगर आपके पास में कोई ऐसा सीरीज है और इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, जब भी आपको इस टाइप से रूट में कोई वैल्यू मिलती है तो आप उसको रेशनलाइज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये मिलेगा हमको रूट ऑफ n⁴ + 1 माइनस रूट ऑफ n⁴ - 1। ओके, अपॉन में क्या करना है आपको, यहाँ पे रूट ऑफ n⁴ + 1 ये हो जाएगा प्लस रूट ऑफ n⁴ -1 इंटू, ओके इंटू क्या करेंगे, ये इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ओके एक सेकेंड, रेशनलाइजेशन करने के थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले। ओके ये हो जाएगा आपके पास में रूट ऑफ n⁴ + 1 माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ n⁴ - 1, और इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं रूट ऑफ n⁴ + 1 प्लस रूट ऑफ n⁴ - 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ n⁴ + 1 प्लस रूट ऑफ n⁴ - 1। सो यार इसका अगर हम रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये रूट हट जाएगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा n⁴ + 1 माइनस n⁴ + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ n⁴ + 1 प्लस रूट ऑफ n⁴ - 1। और यार यहाँ से ये दोनों कट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ n⁴ + 1 और ये हो जाएगा प्लस रूट ऑफ n⁴ - 1। सो यार ये क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, vn कंसिडर करना है। सो यार vn कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटा देंगे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ n⁴ इंटू ये हो जाएगा रूट ऑफ n⁴। अब क्या होगा, vn अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ n⁴ रूट रूट हो जाएगा और ये n² हो जाएगा, n⁴ हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब n⁴ तो हो गया। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये भी तुमको चेक करना पड़ेगा ना। इसका क्या करना पड़ेगा हमको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn अगर फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में n⁴ + 1 ओके प्लस है हमारे पास में n⁴ - 1 इंटू क्या करना है, 1 अपॉन ये करना है ना, तो ये हो जाएगा n⁴। और यार जब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये आ जाएगा हमारा n⁴ यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 ओवर, ओके ये हो जाएगा n⁴ हो जाएगा, और अंदर से हम अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास में n², ओके ये n² हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ n+1/n⁴ प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 n⁴ हो जाएगा। ओके अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पे से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2n²।
अब ये 2n² है, इसको क्या करेंगे आप जनरली इसको क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का n⁴ मिलता है ना, अब देखो यहाँ पे कट नहीं हो रहा है पर ये आएगा वैल्यू फाइनाइट, कब आएगा जब मैं यहाँ पे अगर मैं vn को कंसीडर करूँ ना, तो vn में आप एक फंक्शन को ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसको पूरे फंक्शन को बैठा सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली vn कंसीडर करने के लिए हम इस एक का भी यूज कर सकते हैं या फिर दोनों, देखो दोनों सेम है तो अगर आप एक का यूज करेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा n² मिलेगा, तो n² करने भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कट होते ही ये सीधा आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। ओके डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 2/2 मिलेगा मतलब 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे n⁴ रखते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं करता इस कंडीशन को, तो जनरली क्या करते हैं जब ये दोनों सेम टर्म्स होते हैं तो इनको क्या करते हैं हम एक ही टर्म को यूज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारा काम हो रहा है, देखो चाहे 4 हो चाहे 2 हो हमारा सीरीज ये तो कन्वर्जेंट ही होगा, क्योंकि दोनों में p जो है वो क्या ग्रेटर देन 1 है। तो हमको यहाँ पे फाइनाइट प्रूफ भी करना होता है ना, इसको हमको फाइनाइट लाना है, तो फाइनाइट लाने के लिए हम यहाँ पे देखो उस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा लेकिन इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो vn हमको एज्यूम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर भी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, तो वो ऐड होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारे पास में कैसा है, कन्वर्जेंट है और फाइनाइट वैल्यू है, नॉन जीरो नंबर है, तो यूएन भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस वीएन। सो अगर आपके पास में यूएन को एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और उसमें अगर ऐसा हो रहा है कि un+1 अपॉन यूएन अगर आपको फाइनाइट नॉन जीरो एल जो है वो क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू अगर आपको मिल रही है, तो उस कंडीशन में अगर एल जो है वो है ना फाइनाइट नॉन जीरो होना चाहिए, एल जो है वो क्या है, सॉरी फाइनाइट ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है अगर वो 1 से लेस देन है, नॉन जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार यहाँ पे, क्योंकि ये लेस देन 1 या लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्वर्जेंट होगा जब एल जो है वो लेस देन 1 होगा, डाइवर्जेंट होगा व्हेन एन इज ग्रेटर देन 1, और ये टेस्ट फेल कर जाएगा एट एल इज इक्वल टू 1। अगर आपको एल की वैल्यू 1 मिल जाती है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, वी विल यूज द नेक्स्ट टेस्ट, हम आगे के टेस्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। सो बात करते हैं सबसे पहले इसके एक एग्जाम्पल के बारे में, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसके एक एग्जाम्पल को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके सो इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास में सबसे पहले इसका एन टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यार इसका nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म फाइंड कैसे किया जाएगा, ऊपर से क्या चल रहा है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा n, अगर आप ऊपर देखें तो अच्छा नीचे अगर आप n लेंगे तो ऊपर n-1 करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर ऐसा करें ना यार आप n+1 कर दीजिए ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए n कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू 2 मिल रहा है, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करने पे 2 मिल रहा है, नीचे 1 मिल रहा है। ओके आई थिंक इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, नीचे 3 ही लिखना पड़ेगा ना, सब जगह 3 3 आ रहा है और 3 पावर n हो जाएगा। तो यार ये क्या हो जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल लगा देंगे, ये इसका nth टर्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे un जो है वो क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 3 पावर n। सो नाउ अब हमको क्या करना है, इसमें जो un+1 और un का रेशियो लेना है, तो क्या करना है हमको un+1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं, लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 ओवर un लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा un+1 मतलब क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा n+2 फैक्टोरियल ओवर क्या हो जाएगा 3n+1। इसमें हमको डिवाइड करने का मतलब उसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देंगे ये 3n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n+2 फैक्टोरियल। n+2 को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं n+2 n+1 फैक्टोरियल, और यार ये जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3n 3। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ये n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आपके पास में है और ये n+2 है और ये 3 है, हम इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यार हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इनफैक्ट इनफाइनाइट भी क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। सो यार ये जो un है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय दिस टेस्ट। सिंपली हम बिल्कुल इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे अगर आपके पास में कोई un है, जैसे सीरीज 1/1 पावर 2n, अब ये जो है ना वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में जो अगर ये जो
ए है हमारे पास में, ये ए अगर 2 से ग्रेटर देन होता है तो ये क्या हो जाता है, सीधा सिंपल हमको पता चल रहा है कि ये कन्वर्जेंट होता है। पर कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसके लिए यूएन को लेट कर दें। तो यार यूएन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 पावर एन हो जाएगा, और यूएन प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 पावर एन प्लस वन हो जाएगा। सो यार हम यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन प्लस वन ओवर यूएन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/2n+1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पावर एन। तो यार इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट होगा और आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, और 1/2 क्या लेस देन 1 है, तो क्या कहेंगे, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यार यहाँ पे ये जो सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। वैसे भी ये जीपी जो है, जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उससे आप भी इसको बिल्कुल इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूरा समझ में आया होगा, कोची nth रूट टेस्ट के बारे में। सो यार समझते हैं सबसे पहले कि जो कोची nth रूट टेस्ट होता है इसमें क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोची nth रूट टेस्ट जो होता है वो ऑलवेज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un पावर 1/n। अगर इस टाइप की कोई अगर सीरीज आपको मिल रही है और उसको अप्लाई करने पे ये L जो है, यानी कि उस सीरीज में अगर 1/n करते हैं और उसमें हम n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं, L आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सो इफ L इज लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, और यार L अगर 1 के इक्वल हो जाता है तो वहां पे टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है कोची nth रूट टेस्ट का। यानी कि nth रूट टेस्ट का मतलब ये होगा कि अगर जिसमें n पावर आ रही है उसी में L जो है उसमें लिमिट अगर इनफाइनाइट करते हैं तो हमारे पास में L आता है। मतलब अगर n पावर है, ओके, उसी सीरीज में इसका यूज करें। जैसे यहाँ पे लिखा, इफ nth टर्म ऑफ सीरीज इज इन द पावर ऑफ n, अगर वो n की पावर में है, सो यार इस रूट टेस्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये भी पता चलेगा कि कब इसका यूज करना होता है। सो अब सिंपली यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो रूट टेस्ट है इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो यार सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास में n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, जैसे 1 + 1/n पावर n स्क्वायर, अगर ये आ गया तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर मैं लिमिट अगर पुट करता हूँ n टेंस टू इनफाइनाइट रख के, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, an को यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1 + 1/n, ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे 1 + 1/n n स्क्वायर हो जाएगा, और उस पर क्या करेंगे, अपने को 1/n लिखना है। यहाँ पे 1/n पावर है तो 1/n लिखेंगे। तो 1/n लिखने पे ये टर्म बनेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा आपके पास में 1 पावर 1/n टू n। अब ये जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ई का। तो यार ये जो आंसर होगा वो ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये ई के इक्वल है और ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो यार ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जो ए एन है या यू एन जो अब आप कह देते हैं, यू एन कहते हैं इसको, ये जो यू एन है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेकंड इसके एग्जांपल के बारे में। तो यार इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई सीरीज है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2² अपॉन 1² माइनस ये हो जाएगा 2/1। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो है वो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और नेक्स्ट टर्म जो है वो 3³ अपॉन 2³ हो जाएगा। ओके, आगे आ जाएगा हमारे पास में माइनस ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास में अगर 4 पावर 4 है और अपॉन ये है 3 पावर 4, माइनस ये हो जाएगा 4/3, इसकी पावर -3 है, सॉरी, इसकी पावर -3 है। तो इसका nth टर्म हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे n पुट करता हूँ तो मुझे उसकी पावर जो है वो n+1 मिल रही है, और ऊपर जो है मुझे क्या मिल रहा है, n+ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसकी पावर भी n+1 मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे n पुट कर रहा हूँ तो मुझे n+1 मिल रहा है, और पावर क्या मिल रही है, ऊपर -n मिल रही है। तो यार ये हो जाएगा इसका nth टर्म। अब क्या करना है, इस nth टर्म को आपको लिमिट पुट करना है। सो यार इस पे लिमिट कैसे पुट करेंगे, इस पे लिमिट पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, un जो है वो 1/n रखेंगे, ये n
टेंस टू इन्फाइनाइट हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फाइनाइट पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको सीधा सा क्या करना है, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में चला जाएगा पूरा टर्म, और यहाँ से नीचे से 1 को कैंसिल, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n कॉमन आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर से n कॉमन आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको बिल्कुल इजीली चेक कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, उससे भी आपको समझाएंगे, इससे क्या आप इसको है ना, इससे L फाइंड करें, अगर L 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर L 1 से ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n पावर n स्क्वायर एंड 1 प्लस n पावर n स्क्वायर, अगर आपके पास में कोई सीरीज है तो यार इसका an जो होगा वो क्या हो जाएगा, n पावर n स्क्वायर 1 प्लस n पावर n स्क्वायर इसका an हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, इसमें आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करना है, an पावर 1 बाई n करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा और n पावर n स्क्वायर ओवर 1 पावर 1 प्लस n पावर n स्क्वायर पावर 1 बाई n हो जाएगा। तो ये जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको n पावर n, ये मिल जाएगा 1 पावर 1 प्लस n पावर n हो जाएगा। तो इसमें जब हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो यार ये क्या हो जाएगा, नीचे लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस n बाई n पावर n हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1 बाई n, और ये आ जाएगा n। और यार अगर इस पे हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये क्या फॉर्मूला होता है, e का फॉर्मूला होता है, 1 बाई ई जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और यार जब लेस देन 1 होता है तो सीरीज कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, मतलब ये वाली जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो इस टाइप से हम बिल्कुल इजीली इसके कोची nth रूट टेस्ट से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कोची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में, ये टेस्ट जो होता है सीरीज की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए होता है। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास में जो फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रल से हम टेस्ट करते हैं। देखो इसके लिए आपके पास में एक स्पेशल फंक्शन होने चाहिए। अगर आपके पास में कोई नेगेटिव डिक्रीजिंग है ना, कोई अगर नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग अगर इंटीग्रल फंक्शन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसी अगर आपके पास में कोई सीक्वेंस है जो कि नॉन नेगेटिव हो और डिक्रीजिंग हो, कैसे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर आपके पास में इसका मैं एग्जांपल लेता हूं तो सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अगर आपके पास में कोई सीक्वेंस सीरीज 1 बाई n है तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 मिलेगा, 1 बाई 3 मिलेगा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीरीज है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में अगर ऐसे सीक्वेंस होते हैं तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि उसको हम उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं उसी लिमिट में जिस लिमिट पे इसका समेशन हो रहा है, तो वो अगर आपको फाइनाइट मिलता है या इनफाइनाइट मिलता है उस पे उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास में सीक्वेंस है, ये ये जो सीरीज है, ये सीरीज में क्या होता है कि अगर आपके पास में समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un, अगर आपके पास में मतलब un कन्वर्जेंट होगा, un कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट ux, उसको हम क्या करते हैं, x फंक्शन में रखते हैं, dx अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं और वो फाइनाइट हो जाए, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा अगर ये फाइनाइट होगा। तो सिमिलरली ये डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर इफ 1 टू इनफाइनाइट ux dx इज इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो यार इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, 1 टू इनफाइनाइट लिखेंगे एंड 1 अपॉन x लिखेंगे और dx लिखेंगे। तो यार इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, ये हमको मिलेगा log ऑफ x एंड ये हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट। और यार इनफाइनाइट लॉग इनफाइनाइट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है और वो मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो मतलब ये इनफाइनाइट ही होगा एटलीस्ट, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट मिलेगा तो यार ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब क्या, ये इनफाइनाइट मिल रहा, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेके इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अगर हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमारे पास में ये मिल जाता है n log ऑफ n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x
log x। अब हम क्या करते हैं, इस log x को अगर मैं t लेट करता हूं तो यार log x को t लेट करने पे ये मिलता है 1/x इज इक्वल टू डी टी। इट मीन्स ये मिलेगा मुझे, ओके, ये dx हो जाएगा और ये मिलेगा मुझे 1 to इनफाइनाइट 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1/x नहीं होगा, ये हो जाएगा टी डी टी। और यार टी डी टी जो क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है। लिमिट 1 to इनफाइनाइट रखेंगे तो अगेन आपको इनफाइनाइट -1 यानी कि इनफाइनाइट मिलेगा, और अगेन ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। तो सिंपली अगर हम ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास में कोई सीरीज है जिसमें n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, अगर आपके पास में 1/n स्क्वायर, को ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सॉरी डिक्रीजिंग सीरीज है, तो डिक्रीजिंग सीरीज है तो क्या करेंगे, इसका भी हम 1 to इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो -1/n मिलता है, और ये हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट। और अब हम इसमें पुट करते हैं तो ये मिलता है 1/इनफाइनाइट -1/1, तो ये मिलेगा आपको एक फाइनाइट वैल्यू -1। तो यार ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यार ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये दोनों डाइवर्जेंट है। तो इस टाइप से हम सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का पता लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको पूरा सिंपल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।